इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में। ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। Now I have a question. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question, upon retirement of the Chief Justice? Have I understood you correctly? No, my lord. Your Lordship is not. Then your Lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justices. Lord, so it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the... बात हो रही ना, असूल की बात हो रही ना, असूलों की बात हो रही है। असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है, आप खुद बता दो क्या आगे बताएं। आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक चलेंगे। आगे बताएं। जी सर, आगे बढ़िए। Similarly, your Lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And the judgment है? My Lord, proceed. 2010, my lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात। Citation तो दे देना 2010। कुर्सी नाम मिल इम्तियाज 2010। सर मैं भी दे रहा हूँ। इम्तियाज साहब। सर दे दे, मैं पढ़ लेता हूँ, आप बता। This is a constitutional body. And the Parliament Majlis Shura, that is not, 2010, which has the exclusive power to make laws. इसी में 265 रेडी 2010 SC 483 विंटर का लगती है। इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? सर, इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, कहाँ, किस पेज पे, किस के पैराग्राफ में? The relevant page is page 535 and it goes on to page, नहीं, हमें relevant पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? It goes on to page 536. The Supreme Court rules, देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules. पेज क्या बता? पेज क्या क्या? Page Supreme Court rules are on high pedestal promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules are on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स है, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर, तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। सर ये क्या है? ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद कहीं और हो, मुझे नहीं पता। सर इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में। ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं। इस पे 536। हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। अगली जजमेंट दीजिए। PLD 1997 Supreme Court 426. अच्छा इस केस में लॉर्ड। PLD 1997 Supreme Court 426. Relevant 519. 1997 PLD Supreme 426. जी, सफा 519. 98
511, page 511, 511. Well, 511, Salim Akhtar की लेंगे 7 नंबर 511, page 511, 511. well, 511, Salim Akhtar की लेंगे 7 नंबर Perfect. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it general or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with the proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there's anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड दूसरा बता रहे हैं PLD PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court PLD 1973 Supreme Court 49. Ziaur Rahman's case. 73, 79. 73. My Lord, PLD 1973 Supreme Court 49. relevant page Relevant page is 68. 68 Then it is from 68 to 70, my Lord. to 70 ठीक And इसी proposition पे Please, Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक Paragraph page 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर अगर इजाज़त दे. ठीक May I read, Lord? May I read? ये आपने कहा यही proposition है Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे आप पढ़ना चाहते पढ़ लें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज. My Lord, page 70, जी exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है यस जो होता है लेकिन कहाँ पे है? It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक My Lord, और कोई केस it says, और केस PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. पेज क्या बता दे सुप्रीम कोर्ट Page 161, 161 98 सुप्रीम कोर्ट His Lordship. रेलेवेंट Relevant is page 189, जी 247. यही बात है अलग Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution, any deviation amounts to deviation from the constitution. 321, page 331. ठीक
Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अच्छा, अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे। फिर मैं आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था। नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें अगर अभी आपने क्योंकि खुद कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नहीं, ठीक है, आपने कहा हुआ है। भाई डिपेंडिंग ऑन भाई हो सकता है गलत कहा हो, रूल 11 गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें एक शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद Sir, I am